Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about influence line diagram for the inclined and the diagonal members. In the last lecture, we have learned about influence line diagram of the bottom chord members. So let's get started. If you've not seen the previous video, please do watch, and after that watch this video. It will be very helpful to you. So let's start. Uh, uh, okay, so what I'm talking about is something like this, right? So this and like this. Okay, so what I'm talking, this is the diagonal member. Okay, and this is the vertical member. All right, so in the last two lectures we have learned about top chord members, this top chord members and the bottom chord members. Two, three. All right, these are the top chord members and these are the bottom chord members. All right, and this is the diagonal member, this is the diagonal member, this is the diagonal member. All right, so and this is the vertical and vertical members. So these are the vertical members. Okay, so we have to draw the influence line diagram for these members. There are some steps to it. Let's see what it is. Right, so first what I'll do, I'll take a section for both vertical and inclined members. ठीक है, it's almost one and the same thing. The only thing changes is like यहाँ पर मेरा diagonal members क्या है, inclined है at an angle, like whatever the angle is, theta पे inclined है, right? और मेरा जो vertical है वो inclined नहीं है, right? So बस यही difference है, बस एक angle का difference आएगा and rest everything will be one and the same thing, you know. बस तो अब इसमें भी हम लोगों को sections काटना है, इसमें भी मतलब everything will be same. We have to use method of sections. All right, method of sections. So let's see what are the steps. So first what I'll do, I'll take a section. Okay, I'll take a section first. I'll take a section. Okay, then I will apply unit loads at a joint. Okay, or every joints. Okay, what we can do, either we can apply a unit load on each and every joint. For example, first I will apply unit load on this joint, then I will apply unit load on this joint, then this joint, then this joint, then this joint, then this joint. Okay, so it will be very lengthy process. So what we do, instead of applying unit load on each and every joint, okay, we apply unit load on any of 2 to 3 joints. Okay, and we see what are the fluctuations in the load. We do like this. Okay, so like in this analysis part, we will apply unit load on each joint and see what is the answer. And when we will solve the numericals, we will be applying only unit loads on two joints. All right, so what I will do, I'll take a section, I'll apply unit loads at a joint. Okay, every joint. Okay, or every joint. Okay, and the third one is, after applying the unit loads, what I will do, I will calculate R1 and R2. This is R1. Okay, this reaction R1 and this reaction R2. The truss will be loaded on a support, right? The support will induce some reactions, so that reaction will be R1 and R2. So calculate reactions, support reactions. It's better to write support reactions. Support reactions. After calculating support reactions, what I will do, I will apply conditions of equilibrium. Okay, summation V, summation H, or whatever it is, okay, equals to 0. I'll apply this and calculate required member force. Okay, and in the end I will just draw ILD for that member. So basically I gave you the overview of what we are going to do, in the influence line diagram for the vertical members as well as the diagonal members. So let's take an example and see how we are going to do this. All right, so
So let's draw the so this is the problem, this is the question which we have to solve. All right, and this is the question which we have to solve. All right, so let's start. What I will do first, I will apply okay, so what they have asked in the question is influence line diagram for the member DJ. Okay, so for this member, this D and this is J, this member, for this is an inclined member, we have to calculate the influence line diagram. Okay, inclined member DJ, I have to draw the influence line diagram. So how we will do it, let's see. What I'll do to what I will do, I will apply a unit load, I will apply unit load on each. Okay, I'll write in this manner, I'll apply unit load every time on the joints, and check the effect of unit load at the member DJ. इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में ए जॉइंट पे यूनिट लोड लगाऊंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि डीजे पे कितना फोर्स आया, सिमिलरली उसके बाद में बी जॉइंट पे यूनिट लोड लगाऊंगा एंड देन आई विल चेक कि व्हाट इज द फोर्स ऑन मेंबर डीजे. सिमिलरली आई विल अप्लाई अ यूनिट लोड ऑन जॉइंट सी एंड देन आई विल चेक कि व्हाट इज द फोर्स ऑन मेंबर डीजे. सिमिलरली आई विल अप्लाई अ यूनिट लोड ऑन पॉइंट डी, जॉइंट डी, एंड देन आई विल चेक व्हाट इज द फोर्स ऑन मेंबर डीजे and so on and so forth. All right, so let's start. So ILD for DJ. Okay, first, okay, just a second. Right, okay, so when load is on joint, I will write joint A and F, right, all member forces will be zero, will be zero. ठीक है, डायग्राम से देख के हमें मालूम पड़ जाता है, बाय लुकिंग एट द डायग्राम वी कैन से दैट व्हेन द यूनिट लोड इज एट जॉइंट ए, ठीक है, देयर विल बी नो फोर्स ऑन द मेंबर बिकॉज लाइक दिस विल बी सेटिस्फाइड विद द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दोनों कोलिनियर है. ठीक है, सो जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं आएगा. राइट, यहाँ पर सब जगह पे जीरो जीरो ऐसे. सिमिलरली यहाँ पर अगर एक यूनिट लोड में डालूंगा तो सिमिलरली एक रिएक्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो जीरो जीरो हो जाएगा मेरा. ठीक है, सो आई डू नॉट हैव टू कंसिडर यूनिट लोड एट जॉइंट ए एंड एफ, बिकॉज अगर ए और एफ पे अगर मेरा यूनिट लोड रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे. ठीक है, there will be no effect on the member forces. So that's what I've written. When the load is at the joint A and F, all member forces, remember all member forces will be zero. मतलब हर जगह पे zero zero रहेगा. ठीक है, so basically we'll start with B. ठीक है, I will apply the unit load at joint B. A पे करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, all the members will have the zero forces. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं 1 किलोमीटर डालूंगा तो लाइक इट विल बी बैलेंस्ड बाय द काउंटर बैलेंस्ड बाय द रिएक्शंस. ठीक है, at support A. Similarly, if I'll apply unit load over here, it will be counterbalanced by the reaction at F. So कोई भी फोर्स नहीं आएगा. ठीक है, so let's apply unit load at joint B. Right. So मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ. It will be easy to understand क्या हो रहा है. ठीक है, it is something like this, this and this. ठीक है, so this is A, this is B, right? So मैं यहाँ पर 1 किलोन्यूटन लोड लगा दूंगा, 1 किलोन्यूटन लोड लगा दूंगा. This is F, this is R2, this is R1. ठीक है, so just look at the steps what we have written.
आई हैव टू टेक डीजे का मुझे निकालना है, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ सेक्शन. पहला स्टेप मेरा क्या है, आई विल टेक अ सेक्शन 1 उसके बाद I will apply unit loads, ठीक है. I will apply unit loads at a joint, ठीक है. तो for the time being I have applied the unit load at joint B. यहाँ पर मैंने सेकंड वाला भी लगा दिया. उसके बाद मुझे क्या करना है, कैलकुलेट दी सपोर्ट रिएक्शंस. अब मैं सपोर्ट रिएक्शंस निकालता हूँ. सिंपल है, क्या रहेगा, लाइक इट्स वेरी वेरी सिंपल. R1 plus R2 equals to 1 kilonewton है, right? So I can take summation moment about A equals to 0, राइट, या समेशन मोमेंट अबाउट एफ इक्वल्स टू 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. सो लेट्स टेक अबाउट ए इक्वल्स टू 0. सो ए विल बी, दिस इज एल, each span member length is L, ठीक है. सो इट विल बी 1 into L clockwise, 1 into L, ठीक है. एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज R2 into 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस R2 into 5L equals to 0. So what will be R2? R2 will be 1 by 5, ठीक है. R2 will be 1 by 5. So what will be R1? R1 R1 will be 1 minus 1 by 5. It is 4 by 5. Alright. So I have calculated the values of R1 and R2. उसके बाद what is the next step? ठीक है, I have to use condition of equilibrium. ठीक है. So what I will do for that, take consider any of the section. मतलब या तो मैं राइट हैंड साइड का सेक्शन ले सकता हूँ, या तो मैं राइट हैंड पोर्शन ऑफ द सेक्शन ले सकता हूँ, या मैं लेफ्ट हैंड पोर्शन, ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS, ठीक है. इधर आई कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और आई कैन टेक राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है. अब ये राइट हैंड साइड वाला ज्यादा सिंपल लग रहा है तो आई विल टेक राइट हैंड साइड वाला, ठीक है. सो consider right side. I'll write right portion of the section, right portion of the section 1 ये जो सेक्शन है मेरा 1 ठीक है, इसका राइट हैंड साइड में मैं ले रहा हूँ, ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट अप्लाई, I'll draw the free body diagram of it, so it will be helpful, it will be easy for you guys to understand कि क्या हो रहा है. So this will be the free body diagram. This is R2, ठीक है, and R2 का वैल्यू just now we have calculated, it's 1 by 5, ठीक है, it's 1 by 5. This is joint J, ठीक है, this is joint J. What will be this? This is D. Okay, JD we have to calculate, right? This will be F J D, right? This will be F J I, and this will be F E D, right? I am only concerned about this joint. मुझे सिर्फ इस joint से मतलब है. I am not concerned about this joint and this joint. मुझे basically diagonal member का influence line diagram निकालना है, right? So the diagonal member is FJD, है ना. डायगोनल मेंबर इज FGD, और ये एंगल कितना है 45 डिग्रीज. ये एंगल कितना 45 डिग्रीज. क्यों 45 डिग्रीज है? बिकॉज क्वेश्चन में हम लोग को ये LL दिया हुआ है और इसका हाइट भी L है, ठीक है. सो इट विल बी tan थीटा इक्वल्स टू L by L. सो थीटा विल बी 45 डिग्रीज, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं. हम लोग ने थीटा निकाल लिया. सो व्हाट आई हैव टू डू, अब सिंपल सी बात है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में अप्लाई करूंगा, ठीक है. समेशन V इक्वल्स टू 0 बिकॉज ओके, समेशन V इक्वल्स टू 0. अगर मैं इस चीज को रिजॉल्व करूं, इफ आई रिजॉल्व दिस फोर्स FGD, सो इट विल कम आउट एज it will be FJD sine of 45 and just a second, and it will be FJD cos of 45, right? Am I clear with this? So summation V equals to 0 I am applying. तो क्या रहेगा, सिर्फ दो फोर्सेस है जो वर्टिकली एक्ट कर रहे हैं. एक तो मेरा FJD sin 45 और एक मेरा R2, एंड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. सो इट इज FJD sin 45 equals to R2. So equals to R2, that is 1 by 5, right? So FJD comes out to be 1 by 5 into 1 by sine of 45. Alright, so जो भी इसका आंसर आएगा that will be our answer.
ठीक है, ये कब हुआ? व्हेन आई अप्लाइड द लोड, व्हेन आई अप्लाइड द यूनिट लोड एट जॉइंट बी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट सी। ठीक है, अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट सी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पर इसको रब कर देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट? ये मेरा सी जॉइंट है। ठीक है, सो ओवर हियर वापस से मुझे बनाना पड़ेगा, सो बेटर कि मैं आई विल जस्ट इरेज इट एंड मेक इट ओवर हियर। सी जॉइंट पे मैंने लगा, सी जॉइंट पे मैंने 1 किलोन्यूटन का यूनिट लोड ले लिया। ठीक है, एंड अगेन मैं स्टेप्स देख लेता हूँ। सबसे पहला टेक अ सेक्शन। ओके, मैंने सेक्शन ले लिया हूँ। टेक अ सेक्शन, अप्लाई यूनिट लोड्स एट अ जॉइंट। ठीक है, मैंने जॉइंट पे यूनिट लोड लगा भी दिया हूँ, सी जॉइंट पे मैंने लगा दिया हूँ। आई हैव अप्लाइड यूनिट लोड एट द जॉइंट। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। ऑलराइट, सपोर्ट रिएक्शंस में निकाल देता हूँ। R1 एंड R2 इक्वल्स टू 1 रहेगा, समेशन MA इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब चेंज क्या होगा? R1 एंड R2। ठीक है, सो व्हाट विल बी R1 एंड R2? लेट्स सी। ठीक है, सो समेशन मोमेंट अबाउट A equals to 0, so let's calculate. It will be L into L, so 1 into 2L equals to L plus L plus L plus L plus L, 5L. ठीक है, R2 into 5L, so R2 comes out to be 2 by 5. ठीक है, similarly R1 equals to 1 minus 2 by 5, so it will be 5 minus 2, that is 3 by 5. ऑलराइट, ये मैंने रिएक्शंस निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कंसीडर either side of the section. Either I can consider the right hand side of the section, or I can consider the left hand side of the section. So better consider right hand side of the section, because यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर like you have to draw a lot of things, यहाँ पर छोटा सा है। So for the sake of simplicity I am taking the right hand portion, again right hand portion of the section 1. ठीक है, so मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम यही बनाया हूँ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम यही है मेरा। ठीक है, ये दिस इज एफ जे डी कॉस 45, सेम सेम वही वैसे ही चलेगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हो, तो ये फोर्स मेरा एफ जे डी रहेगा। ठीक है, दिस इज एफ जे आई, दिस इज आई एंड दिस इज ई। ठीक है, सो दिस, जब मैं यहाँ से सेक्शन मेरा कटेगा, सो दिस फोर्स विल बी एफ ई डी, एफ जे डी एंड एफ जे आई। ठीक है, सो सब फोर्सेस मैंने लिख दिया हूँ, ई डी जे डी एंड जे आई। Right, so I'm dealing with the inclined member, so I have to resolve this thing similarly, वैसे ही मैं resolve करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा एंगल का कंपोनेंट है, so this will be cos 45 and this will be sin 45। अब मेरा R2 की वैल्यू चेंज रहेगी। R2 की वैल्यू क्या है मेरी? 2/5, राइट? 2/5। ठीक है, सो अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। सो अगेन FJD sin 45 equals to 1, instead of 1/5 it will be now 2/5, right? 2/5। FJD ये नीचे जा रहा है ये वाला। ठीक है, FJD और ये मेरा R2। सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया हूं, सिर्फ यही दोनों फोर्सेस हैं जो वर्टिकली जा रहे हैं। FJD sin 45, जस्ट अ सेकेंड, FJD sin 45 एंड R2 that is 2/5। सो ये मैंने किया, तो आई विल गेट अ वैल्यू 2/5 इंटू 1/sin 45 इक्वल्स टू, जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो आंसर रहेगा मेरा। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट सी पे मैंने लगा, बी पे लगा दिया हूँ, सी पे लगा दिया हूँ, अब डी पे लगा देता हूँ। ठीक है, अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट डी। अब डी पे लगाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है मुझे। व्हाट आई विल डू, यहां पर मैं इसी पे बना देता हूं, सिंपल रहेगा, राइट? ये मुझे पता है एल है, सॉरी। ठीक है, ये मुझे पता है, ये मेरा डी जॉइंट है, ये मुझे पता है एल है। ठीक है, ये मेरा डी जॉइंट है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 किलोन्यूटन का यूनिट लोड लगा दिया। ठीक है, सो मेरा स्टेप क्या था? सबसे पहले यूनिट लोड लगाना है मुझे। यूनिट लोड लगाने के बाद सबसे पहले सेक्शन लेना है, सेक्शन में ले चुका हूँ। उसके बाद मुझे यूनिट लोड लगाना है, यूनिट लोड लगा दिया हूँ मैंने। उसके बाद आई हैव टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, अब लेट्स सी
what are the values of support reactions. So r1 plus r2 will be 1, वो तो obvious है. फिर I will take summation moment about a, I can take summation moment about f also, you'll get the same value. ठीक है, मैं continuous लेते आ रहा हूँ, उसके लिए I'm not changing this thing. So it will be 1 into l plus l plus l, 3l, right? So it will be this r1 and r2 will change, right? So देखते हैं क्या रहेगा. It will be 1 into 3l equals to r2 into 5l, right? So r2 comes out to be 3 by 5. ठीक है, and what will be r1? It will be 1 minus 3 by 5, so it comes out to be 2 by 5, right? So ये मेरा r1 and r2 की वैल्यू आ गई. And after r1 and r2, what I have to do? I have to apply the conditions of equilibrium. So for the condition of equilibrium, what I have to do? I have to consider या तो राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन या तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन. ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल कंसीडर द राइट हैंड पोर्शन ऑफ द सेक्शन 1 1. ठीक है, अगेन मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस चेंज क्या होगा? r2 क्या होगा मेरा? 3/5, राइट? I will again highlight this thing, 3/5. ठीक है, सो वर्टिकल मेंबर्स कौन सा है? जो मैंने हाईलाइट किया हूं वही मेरे वर्टिकल मेंबर्स है. ठीक है, तो समेशन, इफ आई अप्लाई समेशन v इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन v इक्वल्स टू 0. सो माय resultant will be fjd sin 45 in the downward direction and r2 is 3/5 in the upward direction. So it comes out to be it is 3/5, right? So it will the answer is 3/5 into 1 by sin 45, whatever the answer will be. ठीक है, अब मैंने जॉइंट डी पे निकाल लिया. सिमिलरली आई विल अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट ई. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद एक मिनट इसको भी थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो इट्स जम्बल्ड अप, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. ठीक, सो अब यहाँ पर मैंने 1 किलो न्यूटन का लोड लगा लिया. अब क्या करना है? सिमिलर जैसा हम लोग अब तक करते आ रहे थे. ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू टेक अ सेक्शन 1 1, मैंने सेक्शन ले लिया. अप्लाई यूनिट लोड, अपनी यूनिट लोड भी अप्लाई कर दिया मैंने जॉइंट के ऊपर. ये कौन सा जॉइंट है? ई जॉइंट है, राइट? ई जॉइंट है, ये डी जॉइंट था. ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एंड एफ. ठीक है, ठीक है. So I have applied a unit load over here. Now what I have to do, ठीक है, 1 किलोन्यूटन का यूनिट लोड भी ले लिया. Now I have to draw the calculate the reactions R1 and R2. So R1 plus R2 equals to 1 kilonewton. Summation moment about A equals to 0. Same. ठीक है, so it will be 1 into 4L equals to R2 into 5L. Right? This 1 L plus L plus L plus L. Right? This is 4L. ठीक है, 1 into 4L equals to R2 into 5L. So R2 comes out to be 4/5. ठीक है, this is 4/5. This comes out to be 1/5. ये हो गया मेरा R1 and R2. Similarly, अब मैं क्या करूंगा? मुझे condition of equilibrium लगाना है, तो for that I have to consider either right hand side of the section or left hand side of the section. So for the sake of simplicity, I am again considering the right hand side of the section. मैंने राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन कंसीडर किया और उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लिया, फ्री एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लिया. ये मतलब ये मेरा वर्टिकल डायगोनल मेंबर का फोर्स, ये सब मैंने वैल्यूज वापस लिख लिया. ठीक है, तो चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ R2 की वैल्यू चेंज होगी. R2 कम्स आउट टू बी 4/5, राइट? R2 कम्स आउट टू बी 4/5. दिस इज ठीक है, 4/5. ठीक है, अगेन समेशन V इक्वल्स टू 0. जो भी मैंने हाईलाइट किया हूं दैट विल इज द वर्टिकल फोर्सेस. सो आंसर कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरीके से मैं पूरा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हर जॉइंट पे फोर्स लेके बना सकता हूं. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. Alright, so let's draw the influence line diagram. So this is the span of the truss. I've made it over here. Okay, so the influence line diagram will look something like this. When you will put the values, so it will look something like this. Alright, just a second. Alright, the values are something like this.
Alright, so this is 2 by 5 root 2, 4 by 5 root 2, 6 by 5 root 2. This is 2 by 5 root 2. This is 0. This is 0. Okay, so what are these values? These values are the ones which we have found when, like, these values are this over here which we have found, right? FGD. Okay, what is it? When I applied a unit load at joint B, I got the value of FGD as this one. स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, what मुझे क्या करना है, मुझे हर जॉइंट पे यूनिट लोड लगाना है, उसके बाद मुझे चेक करना है कि मेरा जो डायगोनल मेंबर है जो कि FGD है उसके ऊपर फोर्स कितना आया. तो that's what I did, right? Like first I applied unit load at joint B. ठीक है, so there was no force, there was no first I applied a unit load at joint A, there was no force on the member FGD, right? Then I applied a unit load at joint B, there was a force, or there was a load of 2 upon 5 root 2 kilonewton. ठीक है, then I applied a unit load at joint B, and then I saw that the 4 upon 5 root 2 amount of force was there in member GD. Right, similarly when I applied a unit load at joint B, 6 upon 5 root 2 amount of force was there on joint GD, on joint GD, right? So these are all positive values and these are all negative values. ठीक है, when I applied a unit load at joint E, ठीक है, my answer came out to be negative, minus 2 upon 5 root 2. So hence there is a change in section. There's a change in section. Okay, so this is the way we calculate the influence line diagram for the inclined members, and similarly, very similar to this can be done for the vertical members also. Okay, so I just have to tell you one thing, this procedure which we have done is very lengthy, right? So instead of that, what we do, instead of applying unit load on each and every joint, instead of applying unit load, instead of applying a load at each and every joint and check the effect of that load on the section, on the members, what we do, we apply unit load on only two members, right? So D and E. Look over here, whatever the maximum load and minimum is coming, it's on joint D and joint E, right? This E and this D, I'll highlight it, this D and this E, right? Whatever the maximum load is coming, it's on these two members only. ऑलराइट, सो डायग्राम से हमें दिखता है कि अगर मैं सिर्फ डी और ई पे यूनिट लोड, सिर्फ डी पे यूनिट लोड लगाऊं और फोर्स चेक करूं, और उसके बाद में ई पे यूनिट लोड लगाऊं और फिर फोर्स चेक करूं, तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा. ठीक है, और यही वैल्यूज और जितने भी वैल्यूज हैं वो 0 टू या इसे 0 टू 6/√5 के बीच में, मतलब ये इंक्लाइंड ही रहेंगे, ये वेरी करेगा ऐसा लीनियरली, इट विल वेरी लीनियरली. ठीक है, और यहां भी ये लीनियरली वेरी करेगा, राइट? बिकॉज एंड पे मेरे जो रिएक्शंस वो सपोर्ट फोर्सेस आएंगे वो जीरो आएंगे, राइट? सो व्हाट आई विल डू फ्रॉम दी व्हेन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, वी विल हैव अ डिफरेंट लेसन, डिफरेंट वीडियो लेक्चर फॉर द problem section. Only specifically we'll deal about the problems. In that we will deal like top chord members, bottom chord members, diagonal members and the vertical members in a single numerical. So you'll be able to understand each and everything in detail. All right, so this is the way we are going to use it, do it. ठीक है, तो इसका instead of applying unit load at each and every joint, what I will do, I'll apply unit load on joint D and E. Look in the diagram, then you'll understand. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हर जॉइंट पे यूनिट लगाने से अच्छा था कि अगर मैं सिर्फ डी और ई पे लगाता तो मेरा काम बन जाता था. ठीक है, इट विल हैव बीन सफिशिएंट फॉर मी. ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान दो कि ये डायगोनल मेंबर किसके बीच में है, ये डायगोनल मेंबर किसके बीच में है. अब व्हेन आई से कि यू हैव टू अप्लाई यूनिट लोड ऑन एनी ऑफ द टू जॉइंट्स, इट डजंट मीन कि मैं बी और सी पे लगा दूंगा या सी और डी पे लगा दूंगा. किस पे लगाऊंगा, कहां पर लगाऊंगा? इफ आई एम asking you to apply unit load on any of the two members, so which two members I am talking about? ठीक है, so वो ये members है, ये members है, ये member, ये जो diagonal member है ये किसके बीच में है, ये D joint के बीच में है और उसके आगे वाले joint E joint के बीच में. ऑलराइट, ये joint के बीच में D joint and E joint, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मैं
एक बार डी पे लगाऊंगा और ई पे लगाऊंगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया होता कि ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर दिस, ये फिगर मुझे दिया होता और वैल्यूज दी होती, तो व्हाट आई वुड हैव डन इज इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो फर्स्ट आई वुड हैव अप्लाइड अ यूनिट लोड एट जॉइंट डी एंड आई वुड हैव कैलकुलेट द फोर्सेस लेटर एट जॉइंट ई एंड कैलकुलेट द फोर्सेस। ठीक है, बस दो पे लगाता है, ऐसा करता तो भी मेरा सेम आंसर आता। ठीक है, even then you will get the same answer. So this is our final answer. All right, so with this we have completed the influence line diagram for the inclined members. All right, so let's start with influence line diagram for the vertical members. Okay, so again we'll take the same question. Okay, and in this question we'll try to draw the influence line diagram for the member ID. So what is the member ID? This is the member ID. ठीक है, this is the member ID. All right, so let's start. ठीक है, अब in the last sum I have told you, instead of taking unit load on each and every joint, and मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि instead of taking, मतलब मैं ए पे लोड लूंगा, उसके बाद चेक करूंगा कि आईडी पे फोर्स कितना आया, फिर मैं बी पे यूनिट लोड लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आईडी पे फोर्स कितना आया, फिर मैं सी पे यूनिट लोड लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा आईडी पे फोर्स कितना है, फिर मैं डी पे लूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा आईडी पे फोर्स कितना है। ठीक है, सो आई विल डू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई यूनिट लोड्स ऑन ओनली टू जॉइंट्स। ठीक है, सो द मेन थिंग ओवर हियर इज टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द टू जॉइंट्स आई हैव टू टेक। तो हमेशा क्या लेना, जिस मेंबर पे जिस जब मेंबर पे मुझे निकालना है, दैट इज डी, जॉइंट डी, तो एक तो मेरा जी डी जॉइंट पे मैं यूनिट लोड लूंगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट जॉइंट पे, नॉट द प्रीवियस वन, ऑलवेज द नेक्स्ट जॉइंट, एडजेसेंट जॉइंट। ठीक है, दैट इज मेंबर ई। ठीक है, सो आई विल अप्लाई यूनिट लोड ऑन जॉइंट डी एंड ई। ठीक है, सो इस न्यूमेरिकल में वी वोंट बी अप्लाइंग यूनिट लोड ऑन ईच एंड एवरी जॉइंट बिकॉज वी हैव सीन द लास्ट प्रॉब्लम, as it is very lengthy also and it's it's of no use, you will get the same answer. ठीक है, तो let's start. So let's start with solution. Okay, first what I will do, we know the steps, right? What are the steps? First I will take a section, second is apply unit load at joints. ठीक है, what I will do next, third calculate support reactions. All right, so next is fourth step will be, what is the fourth step? ठीक है, take right or left portion of section. ठीक है, fifth is apply condition of equilibrium and sixth is draw influence line diagram. All right, so let's start with a problem. Right, so my figure is somewhat like this. Okay, right, so here it is R1, here it is R2. ठीक है, मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसका निकालना है, आईडी का। ठीक है, so it looks something like this, like this, like this. ठीक है, ये मेंबर का मुझे ILD निकालना है, this. ठीक है, so what I'll do first is take a section. ठीक है, मैं सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर 1 1. ठीक है, देख, minimum it should cut one, the section should cut one member and maximum the section should cut 3 members. ठीक है, so this is A, B, C. So this section is cutting 1, 2 and 3 members. So all right, D, E and F, G, H, right, H, I and J. Okay. So for what I did, first I cut this section.
उसके बाद अप्लाई यूनिट लोड एट जॉइंट, ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि वेयर टू अप्लाई यूनिट लोड. आई वोंट बी अप्लाइंग यूनिट लोड्स ऑन ईच एंड एवरी जॉइंट. इंस्टेड ऑफ दैट आई विल अप्लाई यूनिट लोड्स ऑन 2 to 3 joints, ठीक है. सो दैट 2 to 3 joints will be that joint on which I have to calculate the influence line diagram, this member ID. So first unit load will be on this joint. So ये जॉइंट पे मैंने 1 जैसे सेकंड ये जॉइंट पे मैंने 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दिया, ठीक है. सो व्हाट आई हैव टू, उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग द यूनिट लोड्स, after applying the unit loads I have to calculate support reactions, ठीक है. So let's calculate it. R1 plus R2 equals to 1 kilonewton, ठीक है. Summation moment about A equals to 0, ठीक है. So let's take the moment. It will be 1 into L plus L plus L. 1 into 3L equals to 1 2 3 4 5 equals to 5L into R2. So R2 comes out to be 3 by 5, ठीक है. So what will be R1? R1 will be 1 minus 3 by 5 equals to 2 by 5. Alright, so we calculated the values of R1 and R2. So what is the next step? Okay, I've done this one, and this one. Next is take right or left portion of this section. Alright, so this is the section. So I will take let's take left hand portion of this section, okay. So take left portion of section, right. So let's draw the free body diagram of it. Yeah, you can also take the right hand portion of the section, it doesn't matters. All right, so let's take right hand only, right hand portion, ठीक है. You know, if you are taking right hand portion, so you have to consider this unit load also. So it will be a bit different from this one, because अगर मैं ये section लेता हूँ, left hand section लेता हूँ, तो ये मेरा vertical member रहेगा और एक ये मेरा vertical member रहेगा, ठीक है. So R1 will be equal to this FID, ठीक है. So R1 will be equal to FID. ये तो simple है, ठीक है. ये वाला अगर मैं यहाँ लूंगा तो ये भी सिंपल ही है, बट लेट्स सी ये कैसा होगा. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. Yes. All right. What is R2? R2 I calculated as 3 by 5. Right. Just a second. 3 by 5. Okay. So this is somewhat like this. This. All right. So it comes out to be F DI. All right. So and this is somewhat like this. FJI. Sorry. FJI. Right. So here also and there is a 1 kilonewton load at joint D. So this is joint D and there is a 1 kilonewton load at this joint, right. So what I have to do, I have to apply conditions of equilibrium, okay, right. This is the next step, right. Apply condition of equilibrium. So I'll apply summation V equals to 0. So what will be my value? It will be FDI. As it is going upwards, I will take it as positive. 3 by 5 is going upward, so plus 3 by 5, ठीक है. 1 kilonewton is going downward, so minus 1 equals to 0. All right, so FDI comes out to be, so FDI comes out to be 0.4. Yeah, so this will be the value when the unit load is at joint D, ठीक है. So now what I have to do, I applied a unit load at joint D and I calculated the force in the member ID, DI or DI, ठीक है. Now what I will do, I'll apply a unit load at joint E. Now I'll erase this load. I'll apply a unit load at joint E, 1 kilonewton, and I will check the force on the member ID, ठीक है. So let's do it, ठीक है. So again I'll apply, ठीक है. Instead of drawing the new figure again, I'm redrawing it on the same figure itself, ठीक है. So apply unit load at joints, ठीक है. I've applied a unit load at the joints. Now next step is calculate the support reactions. Okay, so let's calculate it. R1 plus R2 will be 1. It's one and the same. Summation moment about A equals to 0. So 1 kilonewton into L plus L plus L plus L, it will be 4L, right. So
4L equals to, this is L plus L, 2, 3, 4, 5, 5L into R2. So R2 comes out to be 4 by 5. So this comes out to be 4 by 5. It comes out to be 1 by 5. 1 by 5. Alright. So now what I have to do? My next is take right or left portion of this section. So I'll take the right hand portion. You can also take the left hand portion. It will be one and the same thing. I told you, if you take the left hand portion, so your answer will be FID, FID, right? This force is FID, right? It's going downwards, and this R1 is going upwards, right? So FID equals to R1. Okay, so so just a second. So FID comes out to be, what is R1? 1 by 5. 1 by 5. Okay. So let's check with the right hand portion. So when you will apply on the right hand portion, my R2 comes out to be 4 by 5. R2 comes out to be 4 by 5, right? And 1 kilonewton is on this joint, 1 kilonewton. Okay. So I will remake this thing. This is my free body diagram, FBD. Okay. So now I have to do, now my next step will be condition of equilibrium. I am applying summation B equals to 0, right? So FDI upwards, so positive. Okay, instead of 3 by 5 it will be 4 by 5. All right, and minus 1, right? So FDI comes out to be, FDI comes out to be, okay, it will be 1 by 5, right? 1 by 5, right? So it is same as I got the value while considering the left hand portion of the section. The left portion of section, when I use the left portion of the section, I got the value as 1 by 5, and when I use the right portion of the section, I got the same value, right? So this is the way we calculate the influence line diagram for the vertical members. Okay, so now let's draw it, let's plot it. So it will be something like L0, L1, right? Oh, sorry, just a second. The representations are A, B, C, D, E, and F, right? Right. So first I applied a unit load at joint D, and then I applied a unit load at joint E, right? Okay, and both the values are positive. So first I applied a unit load at joint D and then on joint E. So it will come out to be something like this. First at joint D it came out to be 0.4, I think so, right? 0.4. Okay, and when I applied on this one, it came out to be 0.2. This was 0.4 positive and this was 0.2, and then 0, right? So this is the value. Okay, if you will apply unit load at joint B and check for the forces, it will be greater than 0 and less than 0.4. Similarly, when you will apply a unit load at joint C, it will be greater than B and less than 0. Okay, so in this manner, when you will plot it, when you will plot the values, you will form something like this one. All right, so this is the influence line diagram for the vertical member. Okay, so with this we have completed the influence line diagram for both the diagonal member and the vertical members. All right, in the next lecture we will solve some problems of the past year question papers of the competitive examination. So like we'll be able to understand how to do it in practically in the numerical sums. All right, so thank you very much.